बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? Prepositions are an essential part of language that help establish relationships between words in a sentence. They indicate location, time, direction, manner, and various other relationships. प्रेपोजिशन लैंग्वेज का एक ज़रूरी हिस्सा है जो कि एक सेंटेंस में अल्फाज के दरमियान ताल्लुक़ कायम करते हैं। ये लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, मैनर और इस तरह के कई दूसरे रिलेशनशिप्स को ज़ाहिर करते हैं। आइए अब प्रीपोजिशंस की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में डिटेल्स जानते हैं। Simple prepositions. Simple prepositions are single words that express basic, special or temporal relationships. Simple prepositions single words होते हैं जो बुनियादी, मकामी या वक्ती रिलेशनशिप्स को ज़ाहिर करते हैं। एग्ज़ाम्पल: इन, ऑन, एट, by, for, to, from, with, without. Compound prepositions. Compound prepositions दो या ज़्यादा अल्फाज से बने होते हैं। एग्ज़ाम्पल: इन फ्रंट ऑफ, on top of, instead of, by means of, out of, according to. Preposition of time. Prepositions of time indicate when an action occurs. Preposition of time ये ज़ाहिर करते हैं कि एक्शन कब हुआ। एग्ज़ाम्पल: एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, until. Prepositions of place or location. Prepositions of place or location indicate when something is where something is located. Position of place जाहिर करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी है। एग्ज़ाम्पल: इन, ऑन, एट, by, near, between, among, above, below. Prepositions of direction or movement. Preposition of direction convey movement from one place to another. Preposition of direction एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को जाहिर करते हैं। एग्ज़ाम्पल: टू, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ, through, across, along, towards. Prepositions of agent or instrument. Prepositions of agent or instrument describe the means or agent through which something is done. Preposition of agent or instrument ज़रिया या एजेंट को बयान करते हैं जिसके ज़रिए कोई काम हुआ। एग्ज़ाम्पल: बाय, विद, यूजिंग, विया, थ्रू. Preposition of purpose.
Preposition of purpose indicate the reason or purpose for an action. Preposition of purpose किसी काम के पीछे वजह या मकसद को जाहिर करती है. एग्जाम्पल फॉर, टू, इन ऑर्डर टू, सो एज टू. Prepositions of comparison. Prepositions of comparison establish a relationship of comparison between two or more elements. Preposition of comparison जो है दो या ज़्यादा एलिमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. एग्ज़ाम्पल लाइक, अनलाइक, एज, देन, सिमिलर टू, डिफरेंट फ्रॉम. Prepositions of condition. Prepositions of condition express the circumstances under which something occurs. Preposition of condition उन हालात को ज़ाहिर करते हैं जिसमें कुछ हो जाए, यानी कोई एक्शन हुआ हो. Example, in case of, in the event of, provided, unless, in spite of. Prepositions of cause. Prepositions of cause explain the reason or cause behind an action. Preposition of cause जो है एक्शन के पीछे जो वजह होती है उसको उसकी वजाहत करते हैं. Example, because of, due to, owing to, on account of. याद रखिए ये एक मुकम्मल फहरिस्त नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आम किस्म के प्रीपोजिशंस को कवर किया गया है. मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान रवाबित कायम करके मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली तौर पर दुरुस्त जुमले बनाने में प्रीपोजिशंस अहम किरदार अदा करते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग.